Physical and chemical changes. To understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between a physical and chemical changes. Okay, for distinguishing a substance and a mixture, or a difference between substance and a mixture, we have to classify its properties on the basis of physical and chemical natures. Okay, whether the given substance have a physical change or a chemical changes. In the previous chapter, we have learned about a few physical properties of a matter. The properties that can be observed and specified, like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc., are the physical property. Okay, all these are the physical property of a particular substance or a compound. Okay, whether it have hardness, soft hardness, high current, whether the color of that particular substance is of which type, density. Okay, what is its density? That is also one type of physical property, as well as melting point, how much melting point it contains. Okay, that is also one type of physical property. All these are one type of physical properties. Now, the interconversion of a state is a physical changes because these changes occur without a change in a composition and no change in the chemical nature of a substance. Okay, during the interconversion from one state to another state, okay, there is no change in its volume, or its composition cannot be changed, or a particular element or a atom property will also not changing. So this type of changes is known as a physical. Although ice, water and water vapor all look different and display different physical property, they are chemically same. Okay, chemically all of them are same. Okay? Here we are taking one example. First, ice, which is a one type of solid water. Okay, we say it as a solid water in a solid nature or a solid state. Same way water, which is in a liquid state, and same way water vapor, that is in a gaseous state. Okay, all of them contain H2O only, but in a ice there is a H2O in a solid form. In water, H2O will be in a liquid form. Same way in a water vapor, H2O will be in a gaseous form. So all of them contain same atoms and same molecule. Okay, so this display different physical property. They are chemically same. Okay, physical property are different because just now we have discussed boiling point, nature, whether it is in which state, that's all come in a physical property. So in this physical property are different, but chemically it is same. How chemically? So just now we have discussed H2O. Okay, three of them contain same atoms and composition, H2O. Okay, two hydrogen and one oxygen. In ice also two hydrogen will be there and one oxygen will be there. Same way in water, which is in a liquid form. Okay, in that also there is a two hydrogen and one oxygen. In same way in a water vapor also there is a two hydrogen and one oxygen. So three of them contain a same composition, so it is chemically same. Okay, chemically it is not differing. Okay, different नहीं हो रहा है, chemically it is not differing. So this type of changes is known as a physical change, interconversion of one state from another. Both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. Okay, now we will discuss. Here we are taking another example in which water and cooking oil, both of them are in a liquid state, but its chemical characteristics are different. So they differ in order and inflammability.
So in that you can see that their order is different as well as inflammability is also different. We know that oil burn in a air whereas water extinguish fire. Okay. Now same example. Air. In presence of air, oil will burn while water will extinguish a fire. Okay. So both of them contain different characteristic as well as property. ओके ऑयल जो है वो क्या करेगा, एयर में बर्न करेगा, एयर में जलेगा, बट वाटर जो होगा वो कभी जलता नहीं है। वो तो क्या करता है, अगर जला हुआ है उसके ऊपर वाटर डालेंगे तो वो एक्सटिंग्विश कर देगा। सो वाटर इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग, सेम वे ऑयल विल बर्न। ओके, सो बोथ ऑफ देम, तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट हो, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। सो बोथ ऑफ देम कंटेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। It is this chemical property of oil that makes it different from water. So, chemical property of oil is different from water. So, from this we can say, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑयल का और वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से वो डिफर कर रहे हैं। So, from this we can say that chemical property of oil is different and chemical property of water is also different from that oil. So both of them contain different chemical property. Burning is a chemical change. Okay, now once again, burning is a one type of chemical changes. Okay, if the something is burning, that is a chemical change. During this process, one substance react with another to undergo a change in a chemical composition. ओके, बर्निंग के दौरान क्या होगा, एक जो सब्सटेंस जो होगा वो रिएक्ट करेगा दूसरे के साथ और क्या करेगा, खुद की केमिकल कंपोजिशन में इसके उसका प्रोपोर्शन जो है वो चेंज होता जाएगा। ओके, देख सकते हैं कि कोई भी पेपर जो है उसको हम बर्न करेंगे तो पेपर जो था तब तो उसके प्रोपोर्शन अच्छा था, बट आफ्टर बर्निंग वो एस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ओके, राख के जैसे राख के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग अ बर्निंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी गेट चेंज एंड दिस इज नॉन एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। ड्यूरिंग केमिकल चेंज के दौरान क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, then we say it as a chemical change. If the chemical change is differing from the previous one, initial के comparison में स्टार्टिंग से जो थी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो उसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। We get a new substance and because of changing in its chemical property we will get new substance। हमें क्या मिलेगा, नया substance मिलेगा। A chemical change is also called chemical reaction. Okay, so once again chemical change is also known as a chemical reaction. Chemical reaction यानी क्या, तो क्या during the reaction if the composition of a chemical का composition change हो रहा है तो हम कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। फिर से हम एक बार रिपीट करता हूँ और रिवाइज करते हैं हम। ड्यूरिंग द रिएक्शन, ओके, अगर रिएक्शन के दौरान उसका खुद का जो केमिकल कंपोजिशन था उसमें वेरिएशन आया, चेंज आया और नया सब्सटेंस बना तो हम कहेंगे केमिकल नेचर। एंड रिएक्शन जो कैरिड आउट हुई उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के टाइप कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इधर एज अ एलिमेंट और अ कंपाउंड। सब्सटेंस जो है उसको हम दो में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. Anthony Lorentz Lavoisier, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element.
he defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. Okay, in this he has distinguished that elements are a basic form of matter. एलिमेंट जो है क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर जो है, जो टूटेगा भी नहीं बट इट गेट कन्वर्टेड टू अ सिंपलर सब्सटेंस. ओके, वो टूटेगा नहीं बट वो क्या है, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. वो टूट नहीं रहा है पर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, बाय केमिकल रिएक्शन के दौरान. इफ वी आर डूइंग केमिकल रिएक्शन देन द एलिमेंट विल ट्रांसमिट इट्स मैटर इनटू वन फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा. एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मैटर, नॉन मैटर एंड मैटर. नाउ हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश एलिमेंट को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो वो मैटर है, नॉन मैटर है या मैटर है, उसकी प्रॉपर्टी के बेस. ओके, बाय गिविंग बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी वी आर डिवाइडिंग इट एज अ मैटर, एज अ नॉन मैटर और वेदर इट इज मैटरोइड. मैटरोइड्स मीन्स व्हाट? half matter and half non-matter. It contain both the property, both the characteristic. It contain characteristic of matter as well as its characteristic will be also as a non-matter. मैटरोइड्स यानी क्या? उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक हुई, दोनों प्रॉपर्टी होगी, मेटल की भी प्रॉपर्टी एज वेल एज नॉन मेटल की भी. मैटर यूजुअली शो सम or all of the following property. They have a rustle, okay, they have a shining property, they have a silvery gray or golden yellow color. Matter का क्या होगा? सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर. they conduct heat and electricity. okay, they क्या करेगा? उसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, पास आउट होगी. मेटल के अंदर हम देख ही सकते हैं, कॉपर के वायर सब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होती है, और एल्यूमिनियम के वायर सभी के अंदर. They are ductile. Ductile means what? Can be drawn into wire. Wire फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देख ही सकते हैं. ओके, हाउस होल्ड में भी घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर होते हैं तो वो क्या मेटल से बने हुए होते हैं. सो वी से इट एज अ डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर फॉर्म. दे आर मेरेबल. मेरेबल मीन्स व्हाट? ऑन हैमरिंग थीन सीट में कन्वर्ट हो सकते हैं. अगर हम हैमर से उसको हैमरिंग करेंगे तो वो थीन सीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे मेरेबल. दे आर सोनरस. सोनरस मीन्स व्हाट? ड्यूरिंग हीटिंग वी विल हियर रिंगिंग साउंड, सो वी से इट एज अ sonorous. So once again, characteristic or properties of a metal. They have a rustle, means the shining particle will be there. Okay, they have a nice shine. They have a silvery gray. Its color will be silvery gray as well as golden yellow. They conduct heat and electricity. Okay, they will conduct easily heat as well as electricity. They are ductile. Ductile means what? They can be divided or converted into a wire. They are malleable. Malleable means what? On hammering it will convert into thin sheet. They are sonorous. Sonorous means it will form ringing sound during hammering. During hammering it will form ringing sound. Example of metal are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. These all are the example of metal. Mercury is the only metal that is liquid at a room temperature. Most important, mercury is the only metal. mercury अकेला ही वो ऐसा मेटल है जो क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड है. Now non-metal usually show some or all of the following property. They display variety of color. They have a variety of color. नॉन मेटल का सबसे अच्छा कलर होता है और डिफरेंट वेराइटी सबसे ज़्यादा कलर होता है. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो दे विल नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी और अ हीट, सो इट इज़ पुअर कंडक्टर. ओके, उसके अंदर से हम हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कर सकते हैं नहीं, तो सो पुअर कंडक्टर. दे आर नॉट रस्टर. ओके, रस्टर भी नहीं है, सोनरस भी नहीं है और मेरेबल भी
नहीं, totally opposite to the matter. So this was the properties of a non-matter. Example of non-matter are hydrogen, oxygen, iodine, carbon, bromine, chlorine, etc. In short, here all these are halogen group as well as carbon and hydrogen and oxygen. All these are non-metal. ये सब जो है वो non-metal है. Some elements have intermediate property between those of the matter and non-metal. कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसके अंदर मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की होगी, तो उसे हम कहेंगे मेटालॉइड्स. Example are boron, silicon, germanium, etc. Okay. Once again, metalloids are those in which there is a intermediate property of matter and non-matter both. So that element is said or are known as a metalloid elements. Example are boron, silicon and germanium. उसका example है boron, silicon और germanium. Now compounds. A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one and another in a fixed proportion. Compound यानी क्या? A compound is a substance which is connected by a chemical bond or a chemical composition by a टू एलिमेंट. दो एलिमेंट जो होंगे वो केमिकली कंबाइंड होंगे एक दूसरे के साथ और क्या बनाएंगे? कंपाउंड. व्हाट डू वी गेट व्हेन अ टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड? क्या मिलेगा अगर दो या दो से ज़्यादा कंबाइंड? डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप, गिव 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप. वी हैव डिवाइडेड टू ग्रुप. पूरे क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड किया. एक को 50 ग्राम आयरन फिलिंग दिया, दूसरे को 3 ग्राम सल्फर पाउडर दिया. फर्स्ट ग्रुप को क्या किया? मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर. फर्स्ट ग्रुप को हमने मिक्स करवाया क्या? तो क्या आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को. ग्रुप सेकंड मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर. हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट. ओके. दूसरे ग्रुप को क्या किया? तो क्या क्रश करवाया और मिक्स आउट करवाया और हीट कर रहे हैं. जो मिक्सर था उसको हमने हीट कर रहा है. कौन सा मिक्सर था? तो क्या आयरन फिलिंग का और सल्फर का, सल्फर पाउडर का और आयरन फिलिंग का जो हमने मिक्सचर बनाया था किसके अंदर? चाइना डिश के अंदर. उसको हमने हीट किया. और कब तक हीट किया? तो क्या रेड हॉट ना हुआ तब तक हमने हीट किया. रिमूव फ्रॉम द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल. बाद में हीट करके रेड हॉट हो गए तब हमने क्या किया? ठंडा करने को रख दिया. नाउ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड. चेक फॉर द magnetism in the material obtained. Bring a magnet near the material and check if the material is attracted towards the magnet. Compare the texture and color of the material obtained by the group. Add a carbon disulfide. Now we are adding carbon disulfide to one part of a material obtained. Still well and filter. बाद में हमने फिल्टर कर दिया. The gas obtained by the group first is hydrogen. फर्स्ट ग्रुप जो जिसने क्या किया था? तो क्या दोनों मिक्स ही किया था आयरन फिलिंग सल्फर पाउडर. तो उसके अंदर से हमें मिला हाइड्रोजन. ओके. गैस इट इज़ कलरलेस. हाइड्रोजन गैस जो होगा कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा और कंबस्टिबल होगा. इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबसन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन इन द क्लास. The gas obtained by the group second is hydrogen sulfide. दूसरे के अंदर कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगा. It is a colorless gas with the smell of rotten egg. Rotten egg जैसी स्मेल आएगी. During the reaction in group second there will be evolution of a hydrogen sulfide. किसका evolution होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड का evolution होगा. You must have observed that the product obtained by both the groups show different property. तो यहाँ पे हमने देखा दोनों ग्रुप के अंदर जो भी प्रोडक्ट में दोनों की क्या थी? प्रॉपर्टी डिफरेंट है.
तो द स्टार्टिंग मटेरियल वेर द सेम, बट दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, सेम था, बट बोथ ऑफ देम हैव अ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, दोनों ग्रुप का प्रॉपर्टी डिफरेंट। ग्रुप फर्स्ट हैव कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज। ग्रुप फर्स्ट में जो हुआ वो क्या, कौन सी एक्टिविटी जैसी थी, तो कि फिजिकल चेंज जैसे, वेयर एज इन अ केस ऑफ ग्रुप टू केमिकल चेंज इज डन। ओके, ग्रुप सेकेंड के अंदर क्या हुआ, केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज कहा ग्रुप सेकेंड को, क्योंकि उसको हमने बर्न किया है इसलिए, और फर्स्ट के अंदर कुछ भी किया नहीं है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्सचर किया है, इसलिए उसको फिजिकल कहा। और ग्रुप सेकेंड को हमने कहा है chemical change because of burning both of them or a mixture. Both of them means both the compound which are mixing with each other. The material obtained by the group first is a mixture of a two substances. First is the mixture of a two substances. The substance given are the element iron and sulfur. Okay. आयरन और सल्फर को हमने इंटरमिक्स किया है। The property of the mixture are the same as that of its constituent. दोनों की प्रॉपर्टी जो है क्या है, सेम है ड्यूरिंग इट्स constituent. The material obtained by the group second is the compound. तो दूसरे का क्या है, तो क्या वो कंपाउंड है। On heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different property compared to that combination element. तो ग्रुप सेकेंड के अंदर हमने क्या देखा, तो क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रहा था, टू एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। कंपोजिशन क्या है कंपाउंड का, सेम है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ अ कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। दोनों का टेक्सचर और कलर जो है क्या है, सेम है। Thus we can summarize the physical and chemical nature of a matter in the following graphical organism. This way we can differentiate. Once again, matter के अंदर दो, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मैटर के अंदर प्योर सब्सटेंस होगा और मिक्सचर होगा। नाउ इन अ प्योर सब्सटेंस के अंदर किस दो में डिवाइड होगी, इट गेट सब डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। नाउ व्हाट इज एलिमेंट, तो क्या एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट जो होगा वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट, ब्रोकन नहीं होगा, और वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपलर सब्सटेंस में हो जाएगा। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एंड इट विल फॉर्म टू सिंपलर सब्सटेंस। सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो सके तो उसे हम कहेंगे एलिमेंट। और एग्जाम्पल ये हमने देखा। सेम वे कंपाउंड हैव फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं कंपाउंड को। फॉर एग्जांपल वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा, ये सब जो है वो क्या है, तो क्या कंपाउंड। नाउ द सेकेंड इज मिक्सचर। अब मिक्सचर के बारे में, नो फिक्स कंपोजिशन, मिक्सचर के अंदर फिक्स कंपोजिशन नहीं होगा। ओके, सो मिक्सचर हैव ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ना होमोजीनियस की कैरेक्टरिस्टिक यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और हेट्रोजीनियस के अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस की एग्जांपल है शुगर इन वाटर, वाटर के अंदर हमने शुगर डाला तो वो जो मिक्सचर बनेगा उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एंड अल्कोहल एक्सेट्रा, ये सब। नाउ हेट्रोजीनियस यानी सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर करना, उसे भी हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। सेम वे शुगर एंड सॉल्ट का किया, वो भी क्या है, हेट्रोजीनियस है। वुड, ब्लड, वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा, ये सब जो है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। नाउ
Now the important points. A mixture contains more than one substance. Mix in any property. कोई भी property में वो mix हो सकते हैं. Mixture can be separated into pure substance using appropriate separation technique. Appropriate separation technique को लेके हम मिक्सचर के अंदर जो भी एलिमेंट या एटम्स है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. सॉल्यूशन जो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, टू और मोर सब्सटेंस का. द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, द माइनर इज कॉल्ड सॉल्यूट. मेजर जो होगा उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और माइनर में इसका कम वाला होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट. सॉल्यूशन के अंदर के बारे में बात करें, जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा, सॉल्यूशन के अंदर जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जिसका कम होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ अ सॉल्यूशन. अमाउंट किसके ऊपर डिवाइड करें, कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर, तो कि कितना सॉल्यूट उसके अंदर डाला है उसके ऊपर. Materials that are insoluble in solvent and have particles that are visible to naked eyes. ओके, मटेरियल के अंदर जो भी होगा ओके insoluble जो सॉल्वेंट के अंदर होगा बट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज. नेक्ड आइज है फॉर्म अ सस्पेंशन. जो हम देख नेक्ड आइज है तो उसे हम कहेंगे सस्पेंशन. सस्पेंशन इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सस्पेंशन क्या है, वन टाइप ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. Choroids are heterogeneous mixture in which the particle size is too small to be seen with the naked eye. Choroid के अंदर क्या naked eye से हम पार्टिकल को देख नहीं सकते, but in a suspension we can see with a naked eyes. But a big enough to scatter light. Light को scatter कर सकते हैं. Choroids are useful in industry and daily life. The particles are called the dispersed phase and the medium in which they are distributed is called dispersion medium. जिस मीडियम के अंदर वो डिस्पर्स होगा उसे कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम, और जो फेज होगा ओके जो पार्टिकल है उसे हम कहेंगे डिस्पर्स फेज. प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड. प्योर सब्सटेंस जो है अभी हमने वो टेबल में बात की, तो प्योर सब्सटेंस जो है वो दो में डिवाइड हुए, एलिमेंट एंड कंपाउंड. An element is the form of matter that cannot be broken down by the chemical reaction into simple substance. वो भी अभी हमने बात की. ओके, तो एलिमेंट जो होगा वो ब्रोकन डाउन सिंपल सब्सटेंस में हो सकता है नहीं है, बट कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन. कंपाउंड जो है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है. केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. और कंपाउंड के अंदर दोनों का प्रोपोर्शन जो है दो एलिमेंट या दो एटम होगा उसका कंपोजिशन जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट है. वेयर एज अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और कंपाउंड. नाउ वी विल सी वन वीडियो. Can be classified as pure substances and mixtures. Pure substances are further classified as elements and compounds. Elements. An element is a pure chemical substance consisting of only one type of atom. Different elements are arranged in the periodic table according to their atomic number. Elements can be classified as metals and non-metals, and they exist as atoms or molecules. There are some elements which behave like metals and non-metals which are called metalloids. Compounds. A compound is a pure chemical substance composed of two or more chemical elements such as sugar and baking soda. In a compound, the component elements are present in a fixed ratio. The properties of a compound are different from that of its component elements. The elements react chemically and form chemical bonds between them. Based on the nature of the bonds, compounds can be classified into ionic, molecular, or covalent compounds. Ionic compounds. Ionic compounds contain ions that are held together by the force of attraction between oppositely charged ions. Sodium chloride or common salt is a good example of an ionic compound.
Sodium atom has 1 electron in its valence shell and chlorine atom has 7 electrons in its valence shell. When these atoms collide with each other, the sodium atom loses its valence electron and becomes a positively charged sodium ion and attains stable octet configuration. The electron released from the sodium atom is gained by the chlorine atom and completes its octet. Now chlorine becomes a negatively charged chloride ion. The electrostatic force of attraction between these oppositely charged ions result in the formation of sodium chloride molecule. Now, let's try to understand covalent or molecular bonds. Covalent compounds contain discrete molecules held together by sharing electrons. The simplest example is the water molecule. The water molecule is formed by combining 2 hydrogen atoms with 1 oxygen atom. Hydrogen has 1 valence electron and oxygen has 6 valence electrons. The hydrogen atom with 1 valence electron needs an additional electron to complete its first energy level, and oxygen atom with 6 valence electrons needs 2 additional electrons to complete its second energy level. As 1 hydrogen atom and 1 oxygen atom collides, a covalent bond is formed by the sharing of electrons between atoms. By sharing an electron pair with the oxygen atom, the hydrogen atom completes its first shell and attains a stable noble gas configuration. Oxygen atom now has 7 electrons in its valence shell. By accomplishing its stable octet configuration, oxygen atom shares an electron with another hydrogen atom and forms a water molecule.